आपका स्वभाव कैसा है, आपको क्या तकलीफ है, आपको खाने में क्या पसंद है? Do you find yourself surrounded by such questions all the time and find it vague to even ask a patient who has zero knowledge about your scientific background? Then you are at the right place. Hello, everyone. Welcome back to the Organon Classroom with Dr. Gazala. Here we are, as promised, with a very practical topic, an integral part, an inseparable part of our therapeutic system, that is case taking. We start today with episode 1 of case taking series, starting off with the guidelines given by Hahnemann in Organon, Aphorism 83 to 104. An MUHS favorite, an examiner favorite, and my personal favorite. This is going to be a ride you won't ever forget. Let's start with the lecture for today. As we all know, Organon is nothing but a practical book of guidelines as given by Hahnemann, and it is very much like a systematic approach to any given case. Okay, we group it under aphorisms and we group it together so it becomes easier for us to understand that certain practical topic. Okay, so it is a systematic approach which is helping us understand the do's and don'ts for our cases. Okay, once we study organon and when we practice organon, a patient walking in is just not a medical case or a diagnosis that walks in. The patient that walks in is the sick person. The patient that walks in is the person in the disease. Okay, ये हम बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, and sometimes it sounds even fancier कि wow, person as a whole, person as a disease, the sick and all, like Kent has given in his chapters and everything. तो ये सारी चीज को समझना, irrespective of the mode of therapeutics that you're going to choose for any particular patient. Okay, उसके पहले की जो चीजें आती है, even before the analysis part of it, even before the diagnosis part of it, that is what Hahnemann has covered up in the entire organon, and these aphorisms come to our rescue. Okay, और ये आप समझ सकते हो, this becomes our set format कि हमको ऐसा ही फॉलो करना है, बिकॉज व्हेन यू फॉलो इट इन अ सर्टेन मैनर, बिकॉज दिस इज टाइम टेस्टेड. ठीक है, ये कुछ ऐसे हवा में बात नहीं हुई है या ये कुछ फिक्शनल चीज नहीं है कि दैट जस्ट बिकॉज हैंडमेन ऑल्सो वी हैव टू डू. नो, इट वाज इन प्रैक्टिस. हमारी टाइमलाइन बहुत बड़ी रही है टिल 6th एडिशन केम इनटू एग्जिस्टेंस. ओके, तो वो बात समझने के लिए, वो बात को प्रैक्टिस में लाने के लिए, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू सी things how Hahnemann saw them, and it is still relevant in today's times because it gets you results. Okay, so once now we are starting off case taking, and we are going to cover these group of aphorisms, that is 83 to 104. Okay, in the following episodes we will cover many other topics which is related to case taking as well. We are also going to have some excellent speakers who will share their insights and help us understand the difference that we see and the problems that we face in case taking, right? From theory to practice is what we are going to cover in the Organon Classroom. All right, so let's start with the lecture for today. So, what is case taking? Case taking is defined as a social interaction under predetermined conditions to individualize and form a portrait of disease. All right, this becomes your definition of case taking when asked in exams or otherwise. All right, so what is case taking? Define case taking: a social interaction under predetermined conditions to individualize and form a portrait of disease. अब ये जो social interaction is just not a casual or normal one where you meet some person, a stranger, and you say hi, hello, bye bye, tata. No, this is something that we are going to integrate both with our science and an art. All right, यहाँ पे skills काम आती है. That is why it is important when you are studying medicine, all right, any medicine, you will have to have a certain set of skill set. एक skill set बहुत जरूरी है, soft skills होना बहुत जरूरी है. Only then you will be able to connect with the patient, right? ये आगे जाके जो हम next episode onwards
जो practical aspects करने वाले हैं, in that we are going to take up in detail. But for now we will understand कि एक science और art का integration होना कितना जरूरी है, so that our mission of as a physician is completed, and that is to restore the sick to health, to cure as its term, aphorism 1. All right, see, this is the beauty of organon. जो आप पहले पढ़ रहे हो ना, वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ के वो रीड करके वो वहीं पे छोड़ दो. This gets carried forward till you're advancing concepts, okay, till our last aphorism. And why is that? Because this is continuity, this is the relevance that we keep on talking about, okay, and this forms the basis of our evidentiary support, ki how relevant, how evident is our science is, okay. So taking case taking okay, so taking this idea forward, we are starting off with science, the knowledge of homeopathic principles, basic medical sciences and clinical subjects, knowledge of disease, all right, knowledge of medicine, what is therapeutic in the medicine that you are giving, along with skillful interrogation, eliciting individualizing elements and communication skills. This is going to be your set for understanding and helping the patient recover from the first sight to complete recovery. The journey of that recovery, the journey of cure, is going to be your scientific basis and your skill set. ठीक है, तो पर्पस क्या हो जाता है, इंडिविजुअलाइजेशन एंड पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज एज गिवन इन 83 aphorism, the clinical diagnosis, the prognosis and scope and limitation of homeopathic treatment. When you are taking the patient's case, you get an idea. When you're talking about the patient's problems or the issues in details, you get an idea if that even falls under the scope of homeopathy or not. As much as you will love the science, you will want to know its scope and limitations. So अगर कोई चीज हमारे limitation के बाहर है, there is no problem asking help or integrating it with other systems of medicine, okay. Now that we can define what case taking is, let's come to something even more important, the physician taking the case. We are going to discuss the qualities of an unprejudiced physician, because see, quality of your case, ठीक है, the quality of your case is going to be dependent greatly on the quality of the person who's taking that case, okay. Sound mind, sound health, unprejudiced, अनबायस्ड, बहुत बहुत सारी क्वालिटीज है, आगे आगे जाके आएगी. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट, okay, in detail. Why is it required? So that your case becomes foolproof, your case is what it is and it doesn't fall under any lens that you are wearing, okay. कि तुमको जस्ट लगे कि ये तुमको लग रहा है ये ऐसा है, तो ऐसा है नहीं, ये वैसा ही है जो पेशेंट को लग रहा है, ओके. तो वो क्या करना है, वो कैसे पढ़ना है, is what we are going to see up in this slide, because Hahnemann talks about the unprejudiced physician. हमने पहले aphorisms में पढ़ा है about unprejudiced observer. Similarly, over here, what does this mean? Okay, first is the mindset of the physician. It needs to be completely free from prejudice and preconceived ideas. पहले से कुछ assume नहीं करना है कि just because patient limp करके आ रहा है तो उसको osteoarthritis है. Just because the patient is complaining of headache on and off and it's better when he goes to sleep, or it is dark तो उसको migraine है. Just because the patient is saying he the patient feels a lot more agitated or emotional just before her period तो उसको PMS ही है, is what we are going to avoid. ये assumptions दूर रखते हुए we are coming to our zero preconceived idea mindset, ठीक है. Next will come senses, sound senses and sharp observation. Alert रहना है. You don't just listen to what the patient says, you observe. It is unprejudiced observer, ठीक है. सिर्फ unprejudiced person नहीं है, ऑब्जर्व करना है आपको राइट फ्रॉम द मोमेंट द पेशेंट वॉक्स इन. ये आपने बहुत बार सुना होगा इन सेमिनार्स, इन लेक्चर्स एंड लाइकवाइज यहाँ पे भी आप सुन रहे हो. सो feel and understand the importance of it.
ठीक है, पेशेंट बहुत सारे नॉन वर्बल क्यूज ड्रॉप करते हैं, समटाइम्स द पेशेंट इज मास्किंग their complaint, तो वो उसको डिकोड कैसे करना है विल कम इन ओनली थ्रू ऑब्जर्वेशन, और वो ऑब्जर्वेशन एक दिन में नहीं आता है। आप सोचोगे कि मैं इंटर्नशिप तक वेट करता हूँ या करती हूँ एंड देन आई विल सी हाउ टू ऑब्जर्व एंड ऑल, you'll never be able to do that. This starts right from the time you are studying about unprejudiced observer in your aphorisms. Okay, I hope you guys know which aphorism we are talking about. And या तो ये ऑब्जर्वेशन जो स्किल्स होती है, यू कैन डू इट ऑन डेली बेसिस, यू कैन ऑब्जर्व अ लॉट मेनी थिंग्स अराउंड यू। ये जरूरी नहीं है कि आपको ओपीडी में ही बैठना है और कोई पेशेंट आएगा तो उसको ही ऑब्जर्व करना है, बट यू हैव टू डू दैट ऑन रेगुलर बेसिस। आप देखो आप कितने नॉन वर्बल क्यूज पकड़ सकते हो, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अ स्किल सेट। ठीक है, उसको स्किल बनाना है, इट्स जस्ट नॉट एन एक्टिविटी दैट यू आर सपोज टू डू, इट इज अ स्किल दैट यू आर डेवलपिंग। ऑलराइट, देन कम्स बिहेवियर। बिहेवियर में पोलाइट, पेशेंट, अटेंटिव एंड फ्री फ्रॉम हरी और लेजीनेस। Okay, polite queue, because obviously the patient is coming up to you, the patient is paying you. Okay, whatever the patient is paying you, 300, 400, 500, 600, 1000, how much ever, even if it's a 50 or even it's a 100. Okay, the patient is paying you for his time and your time together. Okay, the patient is wanting to feel received, दैट इज वाई द पेशेंट इज कमिंग अप टू यू, राइट? तो आपका पोलाइट होना कितना जरूरी है, आपका शांत होना कितना जरूरी है, कम्स ओवर हियर इन योर बिहेवियर एज एन अनप्रेजुडिस्ड फिजिशियन। ठीक है, आपको इतना लेजी भी नहीं होना है कि बस पेशेंट को रुकाए, धीरे धीरे पूछे, धीरे धीरे बोले, या इतना हरी में भी नहीं होना है कि आपको पता नहीं है कि आप मेरी डोंबिवली फास्ट छूट जाएंगी। Okay, it's not of that thing, you have to be in your state of calm, you have to be in a state where you're well aware of things around you, you're well oriented, you don't have to be sleepy while taking a case. Okay, along with that you don't even have to be extra alert while taking a case, कि जो चीज है भी नहीं वो आप उसको निकाल के ला रहे हो। ठीक है, तो अगर वैसा कुछ कर रहे हो तो you are doing something which is not aligning only with the qualities of the unprejudiced observer that we've studied earlier. All right, last and never the least comes in execution, that is fidelity, that is faithfulness in tracing the true disease picture without adding your own interpretation. ठीक है, यू माइट फील कि अरे ये सिम्टम क्या है, ये सिम्टम सेट तो मैच नहीं हो रहा है, ये तो मेरे कोई डायग्नोसिस में नहीं आ रहा है, तो मे बी यू हैव मिस्ड अप अ पॉइंट समवेयर। ओके, द पेशेंट इज गोइंग टू टेल यू, अगर उसको सिम्टम्स है तो उसको डिजीज है, इसीलिए वो सिम्टम्स बोल रहा है आपको। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि the patient keeps on telling you something a lot many things together, and you try to just group it up and कि अच्छा ये diagnosis है, ये है, so by the end of your case you've got not 1 2 3 but 6 7 8 of differential diagnosis। वो भी नहीं करना है। Okay, you have to be faithful enough to your science that you've studied, you have to be faithful to the knowledge that you have। इसीलिए जरूरी है नॉलेज ऑफ डिजीज होना, इसीलिए जरूरी है आपका मेडिसिन पढ़ना। ठीक है, it's not for nothing that you've got these subjects along with the homeopathic subjects that you are studying। इसीलिए important होता है clinical diagnosis समझना, so that you know exactly what you are missing out, what you are prejudiced towards। ठीक है, और उसके बेसिस पे जब हम समझ जाते हैं कि मैं शायद आई एम गोइंग टुवर्ड्स one section a lot more than required, then you will know where to stop। All right, so that is why it becomes important to have knowledge of all your clinical subjects together। तो अगर आपको एक unprejudiced observer, एक unprejudiced physician बनना है, तो you need to cover up the mindset, you need to have sharp and sound senses, you need to check your behavior, and you need to execute your knowledge with complete faithfulness। Okay,
Now, once we start taking the case, the next question arises, where are you going to get the information from? आप केस में लिखोगे क्या? अब हमें केस में एक ऐसे राइटिंग तो नहीं करना है, एक स्टोरी राइटिंग नहीं करना है, कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखनी है. तो what are you going to actually include in the case? What is going to be the source of your information? तो यहाँ पे एक सोर्स नहीं है. We've got three sources that you are going to refer to. Okay, the first one being patient's own history. All right, patient's own history, symptomatology में जैसे हमने पढ़ा है about the subjective symptoms, the patient talking about what the patient feels, the what the patient complains of, what other sensations that patient is talking about, right? Second is going to be the observation of the attendant or the family members, जो relative आते हैं patient के साथ में, जो friends आते हैं, जो भी कोई whoever is accompanying the patient, देखना हमेशा उनके पास एक ना दो चीजें रहेगी which they are going to tell you. Okay, sometimes yes, it gets a little vague and haywire, but most of the time this point is very much important and required, because बहुत सारी बार ऐसा होता है, there are few symptoms, few things that the patient misses out on telling, या deliberately वो नहीं बताता है for some reasons which we are going to cover up in the next slide. All right, तो रिलेटिव का सुनना, अटेंडेंट की चीजें सुनना, उनको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना. Third and most important, okay, our own sensory observation as a physician. पिछली स्लाइड में हम अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर बन गए, हम अनप्रेजुडिस्ड फिजिशियन बन गए. अब टाइम है वो माइंडसेट को एग्जीक्यूट करना. ठीक है, तो आप क्या देखोगे, व्हाट यू विल सी, व्हाट यू विल हियर एंड व्हाट यू विल नोटिस ड्यूरिंग द कंसल्टेशन. ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स जिसे हम कहते हैं टू नोटिस द एविडेंट साइंस. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, नाउ another important part, how do we record all this? इसको लिखना कैसे है? Do we write continuous statements form? Do we write as it is the patient is talking? Do we change it into the symptom language or the rubric language? How do we write this? So Hahnemann tells us here very particularly that we should record the patient's expressions as accurately as possible in the very words used by the patients or the attendants. देखो अपना मटीरिया मेडिका भी पेशेंट्स की लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है. ठीक है, गौर से पढ़ोगे, सही से पढ़ोगे, यू विल रियलाइज देयर आर अ लॉट ऑफ कोट्स गिवन इन योर एमएम. ठीक है, तो वो कोट्स क्या है? वो कोट्स पेशेंट की खुद की लैंग्वेज है. ओके, और वही चीज डिस्प्ले होती है इन एक्चुअल सिक पेशेंट हु इज कमिंग इन टू अस. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम वो वर्ड्स प्रिजर्व करें. For every new symptom, you are going to take a fresh new line. You are not going to continue writing it up one by one, एक के नीचे एक. Okay, and if the person is speaking too fast, we always tell them to speak slowly. Okay, इसीलिए यहाँ पे आएगा पोलाइट बिहेवियर, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा. राइट, इफ द पेशेंट इज टॉकिंग जस्ट टू फास्ट, हाँ मुझे दर्द होता है, हाँ मुझे ऐसा होता है, हाँ मुझे सर दर्द है, हाँ मुझे पेट दर्द है, मुझे ये, एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द पेशेंट इज सेइंग, और आप सीक्वेंस नहीं बना पा रहे हो, यू विल टेल द पेशेंट पोलाइटली कि इट विल बी बेटर फॉर अस, फॉर our consultation, for our interview, क्लिनिकल इंटरव्यू ही हुआ ना ये एक तरह का, या फॉर आर इंटरेक्शन, दैट अगर आप थोड़ा स्लो बात करें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी टू रिकॉर्ड योर सिम्टम्स वेल, सो आई कैन गिव यू अ गुड मेडिसिन. राइट, यू आर नॉट गोइंग टू टेल द पेशेंट कि अरे भाई जरा धीरे बात करो, आपको क्या पनवेल निकलना है क्या? यू आर नॉट गोइंग टू टेल द पेशेंट लाइक दिस. राइट, तो यहाँ पे आएगा आपका स्किल सेट, यहाँ पे आएगा आपका बिहेवियर, यहाँ पे आएगी आपकी सॉफ्ट स्किल्स. ओके, but here there are two things that we absolutely need to avoid as well. We don't interrupt the patient and we don't ask leading questions. अब fast को slow करना है तो obviously you're going to do at the start, है ना, आप उसका पूरा end तक खत्म होने का wait नहीं करोगे and then you will say अरे भैया थोड़ा आप slow बात कर लोगे क्या? You're not going to tell that, right? You get an idea when a patient, whoever is talking to you, you get an idea कि उस बंदे की speed क्या रहेगी, तो आप ये पहले बोल सकते हो उन्हें. But when the patient is telling you something, अभी आपका रैपो बन गया, अभी आपकी स्पीड मैच हो गई and it's going well enough, तो यहाँ पे when the patient is telling you something, you don't interrupt and say अरे नहीं नहीं मेरा LSMC पूरा नहीं हुआ है, आप पीछे जाओ और आप मुझे बोलो कि इसमें क्या हुआ था, इसमें exactly आपको क्या हो रहा है. You are not going to tell that. Patient को नहीं पता है कि आप LSMC format आपके दिमाग में ले रहे हो and then you're going to write up and analyze your case. Case analysis comes after you've diagnosed the case and everything else. ठीक है, अब तक हम case taking में हैं. So when the patient is telling you stuff, when the patient is telling you
things about himself. Okay, see, it's not easy to open up in front of the physician. It's not easy. You're a stranger at the end of the day, right? हम अपने वैसे भी नॉन लोगों के पास नहीं जाएंगे अपनी बीमारियां लेकर, बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा दैट कि हंसी उड़ जाए या सबको पता चल जाए एंड ऑल ऑफ दैट which goes around. It's very common, guys. You cannot deny this fact, right? तो आप एक स्ट्रेंजर के सामने जब आपकी तकलीफें बोल रहे हो, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो या कुछ भी हो, you obviously do not want to get interrupted, and that's what Hahnemann tells us over here, that do not interrupt the patient. Okay, and at the same time you're not going to ask leading questions. Okay, you're not going to ask questions in a manner कि आपको ऐसे लगा, आपको ऐसे लगा. Again, see, over here the bias is coming in, over here your prejudice is coming in. ठीक है, तो just because आपको लगा कि ये patient अ, चलो पल्सिटिला हो सकता है, ठीक है, या नक्स स्वामी का हो सकता है, तो आप उसको ऐसे नहीं पूछोगे, अच्छा अच्छा आपको कॉफी पीने के लिए पसंद है, आपको कॉफी का शौक है, अच्छा आपको लाउड म्यूजिक सुनने का शौक है, अच्छा आपको नींद तो नहीं आती है ना सही से. सो यू आर नॉट गोइंग टू लीड द पेशेंट समवेयर कि वो पेशेंट फिर हाँ ही बोल दे. भले ही द पेशेंट कुड बी आगे जाके, the remedy could be Nakswamika, one of the possible remedies. Okay, but from the start you're not going to tell the patient कि नहीं अब तुमको इसको यही remedy बनाना है just because I have studied the polycrest in this manner. ठीक है, so two things we are not going to do. We are not going to interrupt the patient, we are not going to lead the patient. Okay, because the moment we start putting words into that patient's mouth, we may stop recording the true case, और जो हमको सुनना है ना हम वो पेशेंट से बुलवाएंगे. So even that's a problem for us, right? हम लोग उसका अपना केस टेकिंग का रूल ही डिफाई कर रहे हैं of being an unprejudiced person. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था इज व्हाट द एग्जीक्यूशन इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो 3 सोर्सेस है अपने, पेशेंट हिस्ट्री, अटेंडेंस ऑब्जर्वेशंस एंड फिजिशियंस ओन सेंसरी ऑब्जर्वेशंस. इसको मिला के हम केस बनाएंगे. केस कैसा होगा? न्यू सिम्टम न्यू लाइन. ठीक है, and we are not going to, what are we not going to do? We are not going to ask leading question and we are not going to interrupt the patient. ठीक है, जो patient है we are going to take it as it is. Okay, we are not going to create another version of our own self. Click on our next video for part 2 and to complete the current lecture of case taking.